Assalamu alaikum students. This is the remaining part of the discussion which we have about the chapter number 12. Today I'm now going to discuss about the process and the context issues in deciding about the pay in the organization. So it's important to have a participation of the employees in the decision making. It linked to the higher pay satisfaction and the job satisfaction. And delegation of decision making creates the agency cost. लेकिन अगर प्रिंसिपल जो है तमाम के तमाम तमाम तो नहीं, अगर मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो एजेंट की तरफ स्पेंड करेगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन कॉस्ट और उसकी जो डेलीगेशन कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी। नंबर ऑफ एजेंट्स ज्यादा चाहिए होंगे फॉर दैट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है प्रिंसिपल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन दे आर मेकिंग डिसीजन अबाउट द पेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। The right compensation system might encourage self monitoring and the peer monitoring। तो क्या कॉम्बिनेशन रखना है जिसके अंदर किस तरह का जो पे प्लान होगा वो एक सिंगल पे प्लान कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को एड्रेस नहीं कर पाता। इसलिए आपको एक हाइब्रिड प्लान चाहिए होते हैं जो कि मल्टीपल डायमेंशंस को एड्रेस कर सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन अबाउट द मॉनेटरी इंसेंटिव एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। अगर ओवरऑल देखें, अगर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी एम्प्लॉय का तो लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन भी बढ़ जाएगी व्हेन दे आर डिसाइडिंग अबाउट द देयर पे डिसीजन एंड द पे पॉलिसीज एज वेल। तो ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली हेल्प टू हैव अ बेटर पे सिस्टम देन द ऑर्गेनाइजेशन। Another important aspect is the communication. How changes in the compensation can be communicated to the employees. What are the CEO खुद से compensation changes के decision announce कर रहा है या फिर executives अनाउंस कर रहे हैं या कोई written policy communication हो रही है या फिर oral communication policy making हो रही है। कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट और बेहतर होना चाहिए, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के हवाले से, प्रोसीजरल जस्टिस के हवाले से। जिसके अंदर प्रोसीजर जो है उसकी कम्युनिकेशन होना, किस तरह पे को डिसाइड किया जा रहा है और उसके अंदर वॉइस देना एम्प्लॉयज को ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम इंटरपर्सनल जस्टिस भी कह सकते हैं। तो पे और प्रोसेस के जो ये इंटरट्विन्ड इफेक्ट्स हैं। पे टॉप डाउन भी नहीं है, बॉटम अप भी नहीं है उस लिहाज से, बल्कि ये एक साइक्लिकल इफेक्ट है जिसके अंदर एक बेहतर पे सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड जो है वो एड्रेस हो जाता है। HR programs do not work alone. Program can positively affect productivity, participation, and profitability. HR programs can work with the combination of the cooperation with the cooperation and communication with the other departments in the organization as well. तो ये that's very important in the organization। ये कुछ फैक्टर हैं जो कि प्रोसेस एंड कॉन्टेक्स्ट इश्यूज के अंदर आप देख सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड कॉम्पेंसेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड। ये जो आपका कॉम्पेंसेशन प्लान है, हाउ इट बेसिकली एड्रेसेस द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी है, ग्रोथ स्ट्रेटजी है। उसके दौरान किस तरह कॉम्पेंसेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर सकता है। एंड दैट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द whether you are basically reducing your cost or whether you are going for the differentiation or whether you're going for the growth. In this table, you have you can see the different kind of strategy dimension, and if the organization is concentrating or organization is growing, that could be the variation in that pay strategy dimension. For example, risk sharing, the variable pay is low for the concentration strategy and the high for the growth strategy. Benefit level, it has to be above the market for the concentration organization strategy. It has to be below the market for the growth organization strategy, because when the organization is growing, the more focus on the uh, incentives for the employees in the organization. The time orientation is long term for the growth orientation strategy, time orientation is the short term for the concentration organization strategy. Pay unit of analysis is job, and pay unit of analysis for the growth organization strategy and scale. Okay, Ji. So in this chapter, the focus on the design and the administration of the program that recognize employees' contribution to the organization success. And these programs may vary as whether to they link the pay to the individual, group, or organization performance. Or so there are the different kind of the combination of the individual, group, and the organization objective, which can help you decide about the what kind of the pay program which you are going to implement in the organization. Wages, bonuses, and other types of the pay have an important influence on the employee standard of living. And so these are the it has a two major implications. First is that the pay is a powerful motivator, or it can basically promote the organization's success. And a poorly conceived pay strategy can have a detrimental effects on the organization.
And second is the importance of the pay means that employees care a great deal about the fairness of the pay process as well. A recurring theme is that the pay program must be explained and administered in such a way that employees understand their underlying rationale and believe they are fair. The fact that organizations differ in their business and human resource strategy suggests that the most effective compensation strategy may differ from one organization to another. Benchmarking program can help you to get the informative information about your competition, and what succeeds in some organization may not be a good idea for the other. So the balanced scorecard suggests the need for the organization to decide what their key objectives are and use to pay to support them. So these are some key tenets which we have discussed in this particular chapter. Hopefully, you have understand these concepts. You can basically like or you can basically comment on the video. If you have any question, you can also write in the comments as well. I'm trying to basically answer the question as well. Okay. Goodbye. Allah Hafiz.